Okay, I think now it looks good. Yeah. Yes, sir. Okay, so we'll get started if everyone is okay and has joined. I can see all the participants present, so I think we'll get started, right? Sure, sir. Right. Great. So today what we'll be covering is stock market index and classification scripts. We already covered the other three topics to the trading and features and option side of the business. So before I jump into the today's topic, till now we discussed couple of important points like what exactly is equity and what exactly is debt, and then equity the main point was that you are the owner, the shareholder is the owner of the company, but in a limited sense. So ultimately you make money through equities by either capital appreciation or through the dividends. And then we discussed about Indian stock markets, how they have fared in past, and we also discussed couple of points which are basically impacting the economy. Now, once we have built the base for the markets, let's now jump into the more micro level of what exactly is inside the market, how it relates to the daily things which you guys every day see on CNBC or whatsoever. And right now, of course, the current phase markets are very volatile. They're every day going down or up by 1,000 points. I mean, it's an extreme level of volatility. But any which ways, these are the money for investors. So, if anyone can just share, in a very short brief about what we learned in last three sessions. If you could just give a gist of it. I have already told, but I just still want to listen from you guys. Okay, shall I go ahead? Yeah. Okay. Yeah. Okay, so yeah, we started with an introduction about the capital market, and then how it is classified into equity market, debt market, and then we discussed a little about money market. Then ढंग से we started elaborating the primary market in the initial phase about IPOs, a little about private placement, then IPO का process, pre-IPO, then there's book building, post-IPO process as well. उसके बाद हमने discuss करा about the qualified institutional buyers and the high net worth individuals. And उसके बाद yes we discuss case studies as well. So हाँ जी, उसके बाद हमने we analyzed the trend in the stock market, secondary market primarily, starting from the Harshad Mehta case or the bullish and the bearish phases, and then we discuss about the क्या factors होते हैं जो they impact the stock market. For example, the government factors, coalition government and the majority जब government आती है तो वो वाला part था. And उसके बाद हमने we discussed about financial intermediaries as well, क्या होते हैं उसके अंदर. Then yes, about mutual funds a little bit and institutional investors. And उसके बाद indexation का we discussed a little bit in the last class. Best message again, before we jump into today's topic is that long-term investing is key to your success and wealth creation. I hope you will now again be able to frame your mindset in that fashion. जी sir. Great. So, Yes, so now Yes, sir. going forward, how stock market really looks like. I'll just show you the concept of index first. The very first thing, when we talk about stock markets is the index. Currently, what exactly is meant by an index? Index is a portfolio of securities that represents a particular market or a portion of market. It's nothing but a statistical indicator that measures change in the market based on change in the prices of securities included in it. So, in a simple sentence, if I have to say that what exactly is index, then if I have to say where the market is going, what is the mood of the market. तो जनरली अगर आप बात करते हैं कि मार्केट में क्या लग रहा है, आज क्या था मार्केट, तो आप क्या बोलेंगे जनरली? No, market was good.
So how it was good? So ऊपर था या market नीचे था, correct? जी sir. That's how we describe the market or any situation which can be quantified. So if you have to quantify market in simple terms, then stock market quantification happens through creation of index. An index is nothing but the temperament of the whole market, that is going up or is going down. It shows you the mood of the market so that you know how to measure it. Okay. Right. So today, suppose I say we are sitting in a class of say 5 people. There are 5 students in the class. Now, how is the class doing? Suppose I ask the question, how is the class doing? So the subjective answer could be, sir, we are doing very good. We are enjoying the session. We are remembering everything. So that is definitely correct, but it is very still subjective. I don't know what action to take on it. जी. But tomorrow, if we quantify by taking some test and say, okay, somebody scored 70, somebody scored 80, somebody scored 90. So for example, somebody scored only 10 and somebody scored 100 out of 100. Now, what is my class? How does my class looks like? Like 55%. So definitely, you'll try to see some averaging of it. Because किसी ने 100 लिया, किसी ने 10. So I cannot say my class is super, or I cannot say my class is entirely dumb. So then we try to take an average. So we try to come to the real value of that subjective thing, which is otherwise difficult to measure. So we say कि averaging may not be a right model of working. Averaging में जो अच्छा कर रहा है वो demerit में जा रहा है, because Weighted average. exactly. So the best other model could be, so this was Adit. Sir Sagar. Sagar, great Sagar. I'm happy to hear this answer. Weighted average. So I will try to assign a weight, saying I don't want to do injustice to the top performer, and as well as I also want to do a justice to the bottom performer based on the weights of the class. So I say I will issue more weights to the person who is really more genuine, more intelligent and scoring higher marks. So I give him 3 weights. To somebody who's scoring 70, I may say I will give you 2 weights. Then somebody scoring 60, I may say I will give you only 1 weight. Then somebody scoring below 50, I will say I will give you only 0.5 weight. Correct? You're getting the idea? जी. So I will not take you in entirety. जिसने 10 मार्क की स्कोर किया है उसके कारण मैं क्लास की एवरेज भी खराब नहीं होने दूंगा, तो आई मे टेक हाफ कोर्स. वेरी गुड, आई मे गिव 3 points to him or her. So these are the models. Of course, there is a lot of science behind how do you assign weights, but in a simplest format, I will try to give a weighted average. Very good, I may give 3 points to him or her. So these are the models. Of course, there is a lot of science behind how do you assign weights, but in a simplest format, I will try to give a weighted average so that the flaws of normal averages are covered up. So far, so good. Yes, sir. Yes, sir. In stock market, say for example in BSE, there are 5,000 companies, more than 5,000 companies. In NSE, there are some close to 1,500 to 1,700 companies which are listed. So if I have to create an average, it's a huge and a very complex process. Not every script may help in really understanding how the market is working or where it's going. So that's why stock market indexes are created to really measure the market in the most you can say most correct fashion. It will not be perfect, but it is very near to the perfect. So how it works like, so for example in India there are 2 main stock market indices. Nifty 50, it is used by National Stock Exchange. When I say 50, it uses 50 scripts. Scripts are the stocks of the companies. So Reliance, HDFCs of the world, they're all called shares in normal world, and we call them scripts also, which are listed on the stock exchange. SRIPS, scripts. And so NSE is National Stock Exchange, BSE is Mumbai Stock Exchange. Now name changed to the Stock Exchange Mumbai. Now significance of index. A stock index is an indicator of the performance of overall market or a particular sector. So when I say Sensex or when I say Nifty, then that is the indicator of performance of overall NSE market if it is Nifty, and if it is Sensex, it is the indicator of performance of overall market, which is BSE. It serves as a benchmark for portfolio performance
example individual portfolio or a mutual fund portfolio performance. Now it serves as a benchmark of a portfolio. इसका क्या मतलब है? In a crude sense, this means कि if suppose we take the weighted average of the class, 10 to 100 का score है बंदों का, so suppose the weighted average comes to say 70, correct? जी. तो अगर मैंने बोला चलो इस क्लास की weighted average 70 है, so now if somebody comes and challenges me कि my class average is better than you, what do I say him? Let's compare. Let's compare. And how do we compare? By looking at the numbers. कि भाई what is your number and what is my number, right? Right, sir. So tomorrow if there is an individual portfolio, suppose I have a stock portfolio, say my own portfolio, Piyush Nagda's portfolio or Sagar's portfolio or Adit's portfolio, how you say that you have done good? By seeing that who's making big money. So by seeing that who's making big money, in the sense that you will compare yourself with something, and that something will be market overall. Right, sir. Right, right. Suppose you all 5 of you have the portfolios, and suppose Himanshi says ke I did a profit of 10 lakh rupees out of 1 crore investment. So Damini says out of 1 crore investment I made a profit of 12 lakh rupees. Who's better? I mean whoever does more looks better. Right, sir. And of course in absolute terms better. But then if I say ke how did the overall market perform? So overall market, suppose if you invested in the market, overall, the index, which is the market, which we call as market, an index has given 15 lakh rupees on 1 crore on a particular period, what we are comparing, then who is a better performer out of 3? Suppose the index delivers you 15 lakh rupees, of course index is the better performer. Oh, Right, sir. हाँ जी sir. So what I will say is कि दामिनी outperformed हिमांशी ने 10 लाख का प्रॉफिट किया, दामिनी ने 12 लाख किया. She of course did very good. She outperformed Himanshi, but she underperformed Sensex or the market or whatever index you are taking. Right. जी. So she's still not the best. So ultimately, when you look at any kind of comparison in stock market in terms of your individual portfolio or any fund manager's portfolio or any mutual fund portfolio performance, we always compare with the benchmark, which is either Sensex or Nifty or any sectorial index. And then we understand कि ये बंदे ने अच्छा performance दिया या खराब performance दिया by knowing that. हाँ जी. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. How about Bhumika? Yes, sir. So now the third point is the significance of index, that it is used as an underlying for financial application of derivatives. So जो derivatives market होती है, derivatives are nothing but a fabricated or maybe an instrument जिसका खुद का कोई वजूद नहीं होता है, but they are based on something else. तो यहाँ पे निफ्टी इज अंडरलाइंग एसेट फॉर निफ्टी फ्यूचर्स. ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जब डेरिवेटिव्स मार्केट पे जाएंगे 1-2 सेशंस के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि दिस सेंस. नो क्वेश्चंस? Good to go. हाँ जी sir. ओके. सो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स के बाद व्हाट आर द सैंपल और द एग्जांपल्स ऑफ sector index in India? So I talked about the market index, which is the overall market, BSE या NSE. Then there are sectorial indexes to represent a particular sector. For example, Bank Nifty. Bank Nifty is a sectorial index of banking sector. So अगर मैं बोलूँगा निफ्टी आज मार्केट था पूरा ऊपर, पर इसमें बैंकिंग वाले स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो बैंकिंग को मेजर करना है तो आई कैन नॉट कंपेयर इट विद रिलायंस और आई कैन नॉट कंपेयर इट विद हिंदुस्तान लीवर और डीमार्ट जिसका बिजनेस ही अलग है. करेक्ट? If I'll have to compare it with the same sector, so I will try to see how many banks are listed. So I'll create a sector of banking stocks or banking scripts, and I will call them banking sector. तो अगर कोई मुझे पूछेगा आज बैंकिंग सेक्टर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो आई विल से कि ओके आई विल जस्ट चेक एंड टेल यू. आई ओपन द बैंकिंग सेक्टर का लिस्ट एंड आई सी देयर HDFC, SBI, ICICI, blah blah blah, all the banks are there.
So that is called sectorial index. In BSE it is called BankX. In NSE it is called Bank Nifty. Then there could be Nifty Pharma. So the index, the Nifty Pharma index can be representative of pharma sector. Similarly, if I say Nifty Auto, the Nifty Auto index is the representative of auto sector. उसमें सारे stocks नहीं मिलेंगे, उसमें खाली मारुति, हीरो होंडा टाइप्स, maybe 4-wheeler 2-wheeler combination इस तरह से किया हुआ है ऑटो में, वो मिलेंगे. Then there could be IT sector which has Infosys and TCS of the world. So there is a main market index, and then it's broken up into sectorial indexes like bank index, pharma index, auto index, IT index, etc., etc. So there, and then both of these indexes play a big role because हम आगे जाके जो भी पढ़ने वाले हैं उनमें ये बहुत जगह आएंगे. So I want to. Okay. Yeah. So I was discussing about the path-breaking reforms that has been done by Indian government. और हमने फिर कुछ हॉट करियर्स के बारे में डिस्कस किया था आई थिंक लास्ट क्लास में. Correct. कौन-कौन से करियर्स अवेलेबल हैं अभी के टाइम पे. एंड of course you guys are all right, when you have discussed. I mean, you still remember. That's a great recall of what we did. Anything on one of the most loudest messages which you guys would carry for your whole life, or maybe that's a very important message as per me. Sir, is it about the long-term investing as Adat just discussed about? Exactly. So basically the loudest message actually, of course, is all about lot of systems and processes, and we keep discussing everything, from that concept point of view. But still, if you look at investing as a concept, because stock market is just a vehicle through which you invest into a couple of categories. The biggest point for every investor is that if you are a long-term investor, you stand to make a bigger profit, or your wealth creation process fastens up, and you really able to 10x or 20x or 100x your capital actually. So long-term investing is something which is very, very core and the central theme for any investor who's looking to invest in the markets. Any new investor who's also trying to come in, and in the markets, stock markets are very glamorous. So you'll always be lured by short-term money. Of course, there are a lot of people. I mean, 90-95% of the people working in stock markets, they are lured by short-term money, and they try to think that if they can make fast money, which is very easy as per them, which exactly is opposite when you look at the real life scenario. So the loudest message again, before we jump into I want you to really digest this before we move forward. Any questions on the indexes so far? No, sir. Yes. No, sir. So now let No, us see. sir. So let us see how they are created. So methodology of index. So one is the market capitalization model. Market capitalization is calculated through a formula that is total number of outstanding shares into current market price of shares. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि आपके जितने शेयर्स आपने आईपीओ में मार्केट में इश्यू किए, you know the IPO, right? We have discussed. So you know how the promoter dilutes his stake in, floats some shares into market or gives the owner to somebody else. हाँ जी. जो भी मार्केट में शेयर्स हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में, मल्टीप्लाइड बाय देयर करंट मार्केट प्राइस इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक. ठीक है ना? राइट सर. Stocks are given weights according to its market cap. Higher the market cap, higher is the weight in index. This was one simple model of market capitalization weighted index. Now this formula also wanted some refinement because people thought a simple weighted average could also be, not a perfect model. We need something better. So there are many other models of calculating an index. But the other model which is frequently used is free float market capitalization index. Free float का formula है free float into current market price. So the meaning of free float is outstanding shares which are available for immediate trading constitutes free float of a company. So अगर आप IPO लेके आते हैं, आप IPO लेके आने के बाद जब आप पब्लिक को 25% शेयर्स दे रहे हैं,
not every share may be available freely to be sold. There could be some very large institutional investors जिनका lock-in होगा 2 साल 3 साल का, who are not looking to sell their shares immediately. You cannot buy them because they can't sell due to some legal compulsions. Or the promoters holding shares, they cannot also sell their shares instantly. So free float is that float which is owned by public and which is easily and freely sellable. So this shows कि भाई जो फटाफट जो माल में ज्यादा लिक्विडिटी है, जो स्टॉक्स या जो स्क्रिप्ट्स के अंदर ज्यादा लिक्विडिटी है, जो इजीली बिक सकता है, वो फ्री फ्लोट मान के उसको मल्टीप्लाई करो विद द करंट मार्केट प्राइस. So if the promoter has did an IPO of 1 crore shares, out of that if suppose 75 lakh shares constitute free float, so instead of 1 crore shares we will take 75 lakh shares multiplied by the current market price. So there are models to calculate free float and all. We'll not get into the details of it, but currently both Nifty and Sensex use free float market cap basis for calculation of index. So this is a formula. You don't have to remember the formula. It's a very easy thing. But yes, market capitalization is a very important thing. You have to understand कि market capitalization का formula आपको पता होना चाहिए कि भाई total number of shares into current market price. ये constantly everyday hammer होता है newspapers में, यहाँ वहाँ हम stock market की बात करते हैं तो market capitalization is a buzzword. It gets spoken very often in all the kind of discussions. So how this looks like? So if we look at top 20 companies in terms of Sensex weights and market caps, now this is an example, old example of 2017, hasn't changed much. But if I tell you that Reliance, for example, Reliance has 8% weight in Sensex, and in 2007, the overall market cap or value of Reliance, so market cap is nothing but the value of the company in stock market, that was 4.66 lakh crore. ECS weightage in the Sensex was 8.56. It was 4.65 lakh crore. Similarly, HDFC Bank had 8% market cap. It had 4 lakh crore worth of market cap. So 8% in the Sensex and 4 lakh crore worth of market cap. So value of HDFC Bank was, I can say कि भाई 4.25 लाख crore का आज ICICI Bank है. Reliance आज 5 lakh crore का company है. That is the way market talks. And these are the weightages, different weightages. Now these weightages keep changing every 6-7 months. The Sensex or the Nifty committee of the exchange, the index committee, they come and see and which all shares can qualify. So they keep doing plus and minus in this list. They keep modifying it every 6-7 months to see that right companies get representation and the overall market gets a proper representation to right companies. So if you look at the top company Reliance, 4.5 lakh crore की company है, and if you look at the 20th number company Wipro, sorry not Wipro, it is Axis Bank. ये खाली BC company का मैंने list किया है 30 की जगह, so that ना अभी space ज़्यादा utilize हो रहा था. So there is a Axis Bank which is only 1.21 lakh crore company. So you see a huge gap between the smallest company within the Sensex universe and the biggest company. और यही रिलायंस लास्ट अभी 3.5 महीने की पहले जो तेजी आई थी मार्केट में बुल रन, उसमें 10 लाख करोड़ की कंपनी बन गई. And the calculation for that valuation is number of shares outstanding multiplied by the current market price. Got it? Yes, sir. जी. Doubts? So they use free float only, the Nifty and BSE to calculate. Yeah, they all work on. Yeah, the calculation happens on a free float basis. Right. Okay. And if you look at the weightages, the weights of the companies are assigned based on the size of the company, the balance sheet of the company. कि company originally कितनी बड़ी है और उस company को हम क्या valuation balance sheet पे दिए हैं, and then accordingly the weightages are assigned. So Axis Bank is at 2.27 and say Reliance is at 8.7. So this difference is because of the overall size of the company in real terms, not in only stock market but in real terms as well. And there is a model how they assign the weights. There is a scientific model which we will not go into. It's not important for you to understand what models are worked. There is a huge statistical algorithm which basically manages all this. So अगर मैं बोलूँगा सेंसेक्स ऊपर गया है, उसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर है,
राइट? Right. तो मार्केट ऊपर है उसका मतलब क्या है? इज एवरी शेयर इन द मार्केट इज अप? Not necessarily. Not Not necessarily. necessarily. Yeah. So market may be up, but it is not necessarily all the shares going up. Right. Some shares with heavy weightages will always drive the markets. Not necessarily. Not Not necessarily. necessarily. Yeah. So market may be up, but it is not necessarily all the shares going up. Right. Some shares with heavy weightages will always drive the markets. तो जो रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, आईटीसी आप देखेंगे जिसका 7% 8% वेटेजेस है, इनमें छोटा मूवमेंट भी आएगा इनके प्राइसेस में तो मार्केट ज्यादा मूव करेगा वर्सेस एन एक्सिस बैंक और विप्रो एट 2%. इफ सपोज यू से मार्केट इज गोइंग अप, आई मे बी टेम्प्टेड टू फील कि मार्केट सारे शेयर्स ऊपर है. But when you really look inside the market, not every share might have gone up. The market has gone up because couple of shares with high weightages have gone up. So far, so good. Yes. हाँ जी. So now let's see another example of say BSE Sensex on 23rd June 2017. So this does not matter 17 का डेटा हो या 18 का या 19 का. Ultimately, you have to understand the concept. ठीक है ना? जी सर. तो अगर मैं बोलूंगा सेंसेक्स इस दिन 31,000 था, रेड में था, रेड मतलब डाउन था, एंड कितना डाउन था? तो -152 पॉइंट्स डाउन था सेंसेक्स. ठीक है, these are the numbers. जी. तो ये 152 पॉइंट्स जो डाउन था, इसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन थे डाउनफॉल में? आई विल से भाई उस दिन एचडीएफसी बैंक उस दिन 19 रुपया डाउन था. तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज के हिसाब से 19 रुपए का जो डाउनफॉल आया प्राइस में, फ्रॉम अ पॉइंट परसेंटेज और फ्रॉम अ पॉइंट बेसिस, इट क्रिएटेड अ डाउनफॉल ऑफ 41 पॉइंट्स. ये आप रेड कलर में देखेंगे, राइट? जी. ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में है, 41 पॉइंट्स का डाउनफॉल आया सेंसेक्स में. And this 41 points was contributed because of HDFC. HDFC fell by 19 rupees. तो HDFC का जो भी 8% का वेटेजेस था, उसके हिसाब से जब कैलकुलेट हुआ तो पता चला कि भाई HDFC के कारण 41 पॉइंट्स डाउन हुआ है. आउट ऑफ दिस 152, 41 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक ने दिया गिरावट में. टाटा मोटर्स 9 रुपया नीचे था उस दिन. टाटा मोटर्स 9 रुपये के कारण सेंसेक्स 19 पॉइंट घटा. तो इस 152 में 41 के बाद आप 19 ऐसे ऐड करते जाइए, तो वो तब जाके समझ में आता है कि ये जो 150 पॉइंट मार्केट घटा, इसमें अंदर कौन से विलन्स थे. और अगर ऐसे कुछ विलन होंगे तो कुछ हीरो भी होंगे. जी. तो इफ यू लुक एट सम हीरोज, तो नीचे कुछ ग्रीन कलर के, कुछ शेयर्स ऊपर भी गए. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये शेयर्स ऊपर गए हैं, तो सेम डे रिलायंस वॉज अप बाय 1 रुपीज. अब रिलायंस का 8% वेटेज है, वो 1 रुपये की बढ़त के कारण मार्केट में 3 पॉइंट ऊपर आया है, ओनली 3 पॉइंट्स. तो उस दिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन था? आईसीआईसी बैंक. आईसीआईसी बैंक उस दिन 2 रुपया बढ़ा, बट इट कंट्रीब्यूटेड 13 रुपीज टू दी सेंसेक्स बिकॉज ऑफ द ओवरऑल वेटेज. प्राइस उसकी जितनी बढ़त थी, बिकॉज 2 रुपया आप डिवाइड करेंगे 291 से, तो परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा हो जाते हैं बढ़त के. So 13 points were contributed by Sensex. Had these shares not gone up by this many rupees, अगर ये शेयरों में ये बढ़त नहीं होती, तो शायद ये भी सब जीरो या तो माइनस में आ जाता. करेक्ट? This could have Right, further created a problem for the Sensex. वो 150 पॉइंट की जगह और नीचे चला जाता. Right, sir. So when we look at the market, because ये concept क्या समझना बहुत जरूरी है, especially for laymen who are very newcomers to the market. कि market को हम जो देखते हैं, बाहर जो दिखता है वो है नहीं. It's a very different world. You have to really go deep inside and then look at actually the realities कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं. So
मार्केट्स को जब भी आप देखें, सबसे पहले कोई भी बंदा आपको सेंसेक्स या इंडेक्स के बारे में पूछेगा. जब वो सेंसेक्स या इंडेक्स के बारे में पूछेगा, तो इट डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग हैज गॉन अप. इफ यू हैव अ 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, हो सकता है मार्केट उस दिन ऊपर था बट आपका पोर्टफोलियो माइनस में था, उस दिन लॉस में, बिकॉज योर शेयर्स डिडंट गो अप, इट वेंट डाउन. और मार्केट नीचे था, आपका पोर्टफोलियो ऊपर था. व्हाट द लॉजिक? जी. तो वो शेयर्स पे डिपेंड करेगा लॉजिक तो, कि हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं और या So ultimately what happens, the smart guys, they always try to outperform the market. कि अगर मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है या 10% ऊपर गया, तो मेरा पोर्टफोलियो 12% से ऊपर जाए. राइट. और अगर मैं बोलता हूँ कि भाई सेंसेक्स 10% नीचे गया, मार्केट 10% नीचे गया, when I am saying सेंसेक्स और निफ्टी, I am also loosely using the word market. Okay, so when I say market, understand I am talking about either nifty or sensex. So if I say कि market gone down by 10% and if your portfolio went down by 8%, who was better? Who was more? So we could do better, sir. Because you outperform. Market 10% गए, आप 8% नीचे गए. मतलब कहीं ना कहीं आपको कम. Sorry, काम ही नहीं रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Actually, I'm not able to see the video wala scrolling this stuff because my presentation is capturing the whole screen. Anyways, so now let's look at classification of scripts and groups. How these scripts are divided internally. You know, this is a slightly loose example. So there are the classification of scripts is done based on the market capitalization. What was market capitalization? Anybody? Yeah, outstanding shares into the current market price. Yeah, free floating shares into the market price of the share. Yeah. Correct. Yeah. So when we say number of shares multiplied by scripts, we mean to say कि भाई ये कंपनी आज इतने की है. आज अगर रिलायंस 5 लाख करोड़ की कंपनी है, that is the market cap. And large cap and market cap is now further divided into large cap. Large cap consists of big companies with market cap in excess of 50,000 crore rupees. It can be anywhere from 25,000 to 50,000 crore. तो ये 50,000 करोड़ एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि बड़ी कंपनियों को लार्ज कैप में इंक्लूड किया जाता है. Large cap stocks are highly liquid stocks. Buying and selling in large quantities is easy. इसका मतलब ये है कि जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसके शेयर्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ले बेच करते रहते हैं, बाइंग सेलिंग करते रहते हैं. सो लिक्विडिटी इज वेरी हाई. आपको कभी भी खरीदना है बड़ी क्वांटिटी, 1 लाख शेयर 2 लाख शेयर आप खरीद सकते हैं. आपको कभी भी बेचना है, आप आराम से बेच सकते हैं, क्योंकि जिस स्टॉक में लिक्विडिटी अच्छी है उस स्टॉक में आपको एंट्री या एग्जिट जल्दी मिलती है. व्हाट द आइडिया? This green color line is very important. You know, high liquidity stocks. मतलब कोई भी स्टॉक में लिक्विडिटी अगर अच्छी होगी तो it will always attract an investor. Liquidity means buying and selling in large quantity. Plus, these large companies are supposed to have sound financials and stable business growth. So what does it mean? Sound financial and stable business growth का मतलब है कि भाई लार्ज कैप कंपनी में ये माना जा रहा है कि ये बड़ी कंपनी है, ये अच्छा बिजनेस कर रही है, स्टेबिलिटी है कंपनी में compared to other companies. Then good growth potential. Then this company will also grow in future. क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में आज जो प्राइस दे रहे हो वो ये फ्यूचर अजम्पशन है कि ये कंपनी ग्रो करेगी आगे जाके. एंड प्लस लार्ज कैप्स आर लेस अफेक्टेड बाय मार्केट वोलेटिलिटी. लार्ज कैप्स ऑफ कोर्स मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी तो एवरीबॉडी विल गेट अफेक्टेड, बट लार्ज कैप्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा सेफर माने जाते हैं. नॉट एग्जैक्टली कि इसमें लॉस नहीं होगा, बट जनरली अगर मार्केट में 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है तो लार्ज कैप्स के कुछ स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है. दे आर स्लाइटली लेस वोलेटाइल, they are less affected by the market volatility, and they are also less prone to market manipulation. So what I mean by this market manipulation, anybody who can try to take a view on this, what I'm trying to say here. Large cap,
Sir, as you told earlier, we were talking about a couple of things कि कैसे मार्केट में कुछ जो बिचौलिए होते हैं, जो बैठते हैं, जो इफेक्ट करते हैं पूरी मार्केट को ड्यू टू दिस साइकिल ऑफ मेकिंग अ फॉल्स अकाउंट्स इन Correct. वो जो आपने एक एग्जांपल दिया था. So they were operators. Exactly. Yeah. जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज होती हैं राइट. उसको मैनिपुलेट करने के लिए. तो आप कोई भी चीज को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो? बस सागर और Adit, yeah. So Adit, you are also you're right, and I think Damini or somebody else pitched in. I forgot Yes. So लेस प्रोन टू मार्केट कैप का सिंपल मतलब है कि लार्ज कैप में अगर 25-50 हजार करोड़ या उससे भी बड़ी कंपनियां हैं, या जैसे आपने देखा रिलायंस 5 लाख करोड़ की कंपनी है, HDFC 4 लाख करोड़ की कंपनी है, तो अगर आप ऑपरेटर हो, ऑपरेटर कितना पैसा मार्केट में लेके आएगा मैनिपुलेशन करने? ज्यादा 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, बहुत बड़ा आदमी होगा 100, 150, 200 करोड़ लेके आएगा मार्केट में मस्ती करने, ये मैनिपुलेशन करने, राइट? सो व्हेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लार्ज कैप, a normal operator with 50,000, 50 crore or 100 crore cannot come and influence the prices of such large cap stocks, because ये large cap stocks में अगर किसी को भी मस्ती करनी है प्राइसेस में, प्राइसेस बढ़ाने हैं या प्राइसेस घटाने हैं, तो उनको करोड़ों रुपए मार्केट में डालने पड़ेंगे वो इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिकॉज कंपनी की साइज बहुत बड़ी है and liquidity is very high. It's owned by many investors, not by limited few groups. It's owned by many investors. Large cap का ये भी एक ये होता है, that's why it's liquid. right sir. You cannot just influence everyone to sell or everyone to buy just because you are trying to pull the stock by 20-30 rupees for some short Manipulate the market. तो अगर लार्ज कैप में आपको मैनिपुलेशन करना है, आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, सो जनरली ऐसा नहीं कि मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, मैनिपुलेशन कहीं भी हो सकता है, मगर लार्ज कैप में चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं. गॉट आइडिया? Right sir. Now let's look at mid cap. पहला large cap था, second was mid cap. Mid cap can be said to be those companies which can be classified among 5,000 to 50,000 का ग्रुप. पर अभी मार्केट में मंदी आ गई है तो हम 50,000 करोड़ की जगह is safer to estimate और take it as a 25,000 करोड़ का कैप. यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है मार्केट कैप में कि ये 50,000 करोड़ है तो ही मार्केट में मिड कैप है या लार्ज कैप है. These are some ballpark numbers, and I will explain it to you when we come to mutual fund कि how large cap is defined in a legal sense by SEBI. But when you talk of pure stock markets, large cap या mid cap का कोई definition नहीं. Large cap means बड़ी कंपनी है, mid cap means बीच वाली कंपनी है जो फ्यूचर में बड़ी हो सकती है. तो मिड कैप कंपनीज की साइज को हमने यहाँ पे 5,000 to 50,000 करोड़ पकड़ा है, बट अभी करंट मंदी में आप इसको 5,000 या 2,000 to 25,000 करोड़ पकड़ के चल सकते हो. These stocks are less liquid stocks. Buying and selling in large quantity is not easy. अगर आपको अचानक आके रिलायंस में 10 लाख शेयर भी लेना हुआ तो आप बड़े आराम से परचेस कर सकते हैं 10 लाख शेयर रिलायंस के, क्योंकि इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक विद अ वेरी हाई फ्री फ्लोट. पर मिड कैप में अगर आप आएंगे तो शायद इतनी लिक्विडिटी नहीं होगी. आपको अगर 1-2 लाख शेयर खरीदने होंगे तो शायद आपको इतनी लिक्विडिटी नहीं मिले, बिकॉज देयर मे बी लेस सेलर्स और देयर आर लेस बायर्स. Generally there is a liquidity, but when you want to really do a very big transaction, that time it can become a problem. May or may not have sound financial and stable business. Mid caps are growing stocks, they are growing companies. They may or may not have a stable business model. High growth potential. Of course, mid caps comes with a high growth potential because it's a growing company. तो छोटी कंपनी कभी भी बहुत फास्ट बड़ा हो सकती है, मतलब the rate of growth is always high. A growing company, a mid-cap stock will not become a 25,000 crore का stock, मतलब it will not become a 50,000 crore का stock overnight from 25 crore. मतलब 25,000 करोड़ से वो 50,000 करोड़ पे डबल नहीं होगा तुरंत, मगर वो 25,000 करोड़ से 28-30,000 करोड़ बहुत जल्दी होगा, फास्ट होगा. The percentage of growth or the rate of growth will be much faster in a mid-cap stock because a mid-size company can always give surprises to market because of their being nimble-footed. But these companies are always highly affected by market volatility. अगर मार्केट में बहुत volatility है, mid cap stocks भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे. So they are more riskier than large caps.
and they are more prone to market manipulation. Why? Because उनका market cap ही अगर suppose 5,000, 10,000, 15,000 करोड़ है, तो possibly operating थोड़ा सा easy हो जाता है compared to large caps. So most of the operators you will see trying to do some kind of manipulation in mid cap or small companies जिनमें कम पैसे से आप ज्यादा manipulation कर सकते हैं. Got it? जी. So mid cap का simple मतलब ये है कि the potential of growth is very high because the company growing stage में है. Growing stage में आप rate of growth जो होती है वो बहुत fast होती है, भले आपकी size बड़ी ना हो. So that's why if you want to really outperform the market, then possibly, and another theory is that people want to buy future large caps by identifying them today when they are mid caps. कि आज अगर कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है, वो फ्यूचर में अगर उसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, तो 1 लाख करोड़ की कंपनी बनने वाली है या लार्ज कैप बनने वाली है. So it is always said कि keep an eye on those mid caps which can become large caps in future. So we saw two caps, large cap and mid cap. Third category is small cap. Small caps are small companies with market capitalization of close to 500 to 5,000 crore. But in today's sense, you can get 200 crore to 2,500 crore. Very low liquidity. Buying and selling in large quantities can be extremely difficult. नॉर्मल मार्केट टाइम्स में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है स्मॉल कैप में, मगर जब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, जब बहुत गिराव या चढ़ाव आता है, तो स्मॉल कैप्स के अंदर भी बहुत फास्ट मूवमेंट आता है. पॉसिबली यू मे नॉट बी एबल टू बाय और सेल इजीली. May or may not have sound financials and stable business. Again, they also have high growth potential, but they are also highly affected by market volatility, and small caps are also highly prone to market manipulation. Got the idea? Hope you guys are in sync with me. Yes, sir. Yes, sir. Because ये थोड़ा सा क्या technical है, I have to explain it in a way which, I mean, this is the simplest way which we can do it. So simple example पकड़ते हैं, हमने startup की बात की थी, right? हाँ जी. अपना खुद का पैसा लगाता है, फिर जब उसका ग्रोथ होता है तो मार्केट या बैंक से जाके लोन लेता है या सीड कैपिटल उठाता है या वेंचर कैपिटलिस्ट को पकड़ता है, राइट? Yes, sir. फिर और ग्रोथ होती है तो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आते हैं, एंड और ग्रोथ अगर उनको करनी है, जब 400-500 करोड़ रुपया मार्केट से रेज करना है, तो दे कम आउट विद आईपीओ, करेक्ट? जी. तो आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी छोटे साइज से ग्रो होती है, और जब वो कंपनी छोटी होती है तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है. आज अगर मेरा सेल्स टर्नओवर, सपोज आज हमारा सेल्स है सपोज 1 करोड़ रुपया इस साल का, छोटी कंपनी है, तो अगले साल हो सकता है वो कंपनी 1 करोड़ का 2 करोड़ कर ले, 2 करोड़ का 3-4 करोड़ भी कर ले अगले साल फास्ट. 3-4 साल हो सकता है स्टार्टिंग में वो कंपनी 100-200% ग्रोथ करे अपने प्रॉफिट्स में और सेल्स में. इट्स पॉसिबल बिकॉज द साइज इज स्मॉल, योर बिजनेस इज स्मॉल, राइट? जी. बट धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है, जब आपकी मेच्योरिटी आने लग जाती है बिजनेस में, देन स्लोली आप 1 करोड़ से 5 करोड़ तक तो बहुत स्पीड में पहुंच जाओगे, बट 5 करोड़ से 10 करोड़ पहुंचने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज नाउ दैट गैप इंक्रीजेस. So now you are still growing, you're a good company, but now your growth slows down. फिर आप क्या होगा, 30-40% की स्पीड से ग्रो हुए, तो 5 करोड़ का आप 7 करोड़ पे पहुंचे, फिर 7 करोड़ से आप अगला 8 करोड़ तक पहुंचे, which was only around 10-15% growth, and then you averaged out and are now only growing at say 10-15% because you have become a large size. Because large size companies का problem क्या होता है, they become slowly so large that immediately introducing new products becomes very difficult, immediately changing systems becomes difficult, immediately adapting to the new market models becomes very difficult because आपकी size बड़े होती जा रही है. So it's like elephant which is trying to turn. So it's always elephant versus a smaller animal which can run faster. That is the way you look at large caps, mid caps and small caps. Small caps में सबसे fast ग्रोथ की कैपेसिटी होती है. 1 रुपए का 2 रुपया, 2 रुपए का 10 रुपया होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता शेयर का प्राइसेस, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स होते हैं. ग्रोथ पोटेंशियल भी रहता है और ऑपरेटिंग की पॉसिबिलिटीज भी रहती है मैनिपुलेशन से. ओके जी. पर अगर कोई बड़ी कंपनी है, सपोज रिलायंस बोलेगा कि मुझे यहाँ से डबल होना है, मैं ऑलरेडी 5 लाख करोड़ कंपनी,
तो रिलायंस में टेक 3-4 years. ये तो रिलायंस है इसलिए बात अलग है कि दे हैव जियो एंड दे कैन स्टिल इन्वेस्ट, बिकॉज अगर आपको हाई ग्रोथ करनी है तो आपको मार्केट से कंटिन्यूसली पैसा उठाते रहना पड़ता है. इट इज द एबिलिटी ऑफ यू डिप्लॉइंग मैक्सिमम कैपिटल टुवर्ड्स ग्रोथ इफ यू रियली वांट टू कीप ग्रोइंग फास्टर. So Reliance was able to raise a lot of money, so they were able to still become a 10 lakh crore company from 5 lakh crore within 2 years. 2017 का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, 2017 का, जिसमें रिलायंस 4.66 लाख करोड़ की थी, करेक्ट? राइट सर. रिलायंस 2017 की 4.66 लाख करोड़ से 2019 में 10 लाख करोड़ की कंपनी बन गई. इंडिया फर्स्ट कंपनी टू टच 10 लाख करोड़ मार्क. Okay. ये रोज चेंज होता है क्योंकि रोज आपके शेयर प्राइस चेंज हो रहे हैं. तो रोज आप कल 10 लाख करोड़ के थे, आज आप 9 लाख करोड़ के हो जाओगे. आज वापस रिलायंस क्लोज टू 6.5 लाख करोड़ की कंपनी है. ऊपर में 10 लाख करोड़ था, अभी रिलायंस क्लोज टू 6.5 लाख करोड़ की कंपनी. तो एवरीडे ऐसे बड़े स्टॉक्स में 25-50 हजार करोड़ ऊपर नीचे होता है. बट व्हाट आई मीन टू से, ये रिलायंस का एक्सेप्शन अगर हम हटा दें तो मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज बिकम व्हाइट एलिफेंट्स. रनिंग फास्ट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. दे आर वेरी स्ट्रांग, जल्दी गिरेंगे नहीं, बट if it comes to running fast, they may not be able to run, so they will start walking Okay. or maybe brisk walking. Okay. तो आज अब पोर्टफोलियो की जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे एज ए इन्वेस्टर, आप खुद का पैसा मार्केट में लगाएंगे या आप किसी और को रिकमेंडेशंस देंगे, तो अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू हैव अ वेरी फाइन बैलेंस ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स. तो ही आप स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएंगे. अगर आपने गलत स्टॉक्स का सिलेक्शन किया तो यू मे नॉट बी एबल टू आउट परफॉर्म द मार्केट्स. तो अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे सेफ्टी चाहिए, तो हो सकता है आपने अपना सारा पैसा बड़े स्टॉक्स में लगा दिया तो लार्ज कैप्स है. तो लार्ज कैप्स इतना स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे हैं जितने, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चालू रहती है तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स कैन ग्रो मच फास्टर ड्यूरिंग अ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ फेज. और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ फेज तभी आता है जब मैंने आपको इकोनॉमिक साइकिल दिखाई थी आगे कि देयर आर साइकिल्स वेयर इन, जैसे 2002 से लेके 2008 की जो तेजी आई थी, उस टाइम पे इकोनॉमी भी उतने ही फास्ट ऊपर जा रही. 4% का जीडीपी ग्रोथ became 5%, 5 became 6% GDP growth. Economy was growing, so the stock market was growing because the share prices of company was growing. Why? Because investors were expecting that growing economy will enable the companies to make more profits. Correct? Okay. But making profit, being a very large company, I mean making a fast profit could be difficult. Making a big profit could still be easier. तो आपको अपना पैसे तीनों जगह ऐसे लगाने हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, वेयर यू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. आपके पास ज्यादा स्पीड में भागने वाले शेयर्स भी हैं पर वो रिस्की भी होंगे, वो जल्दी नीचे भी आ जाएंगे. और आपके पास स्लो भागने वाले शेयर्स भी होंगे जो स्टेबल होंगे, वो इतना जोर से नीचे नहीं आएंगे या वो कंपनियां बंद नहीं होंगी. छोटी कंपनियों में ताला भी लग सकता है अगर जरूरत से ज्यादा रिस्क लेके उन्होंने बिजनेस बहुत जोर से एक्सपांड करने की कोशिश करनी हो. Are you getting an idea of how this large, mid and small guys basically they really behave? Yes. Any questions so far? No, sir. So market caps change every day. So of course, it's a subjective thing.